Transversal, a line that intersects two or more lines at different points is called a transversal. Here are two lines given, which is A and B. It is intersected by a line L. So this line L is called a transversal. This is transversal. Now pair of corresponding angles. We have been drawn a transversal with these two lines, this angle 1 and angle 2, angle 3 and angle 4, angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8. These are known as the pair of corresponding angles. After corresponding angles, there is a pair of alternate angles. Angle 1, 2. It is a pair of alternate angles. Angle 3 and 4. This is also another pair of alternate angle. These pairs of angle 1 and 2, angle 3 and angle 4 are known as alternate exterior एंगल. इसके अलावा भी और भी एंगल्स पेयर होते हैं ऑल्टरनेट, जिसमें है एंगल 5 और 6, एंगल 7 एंड 8. These pairs of angle 5 and 6, angle 7 and 8 are called alternate interior angles. Alternate interior angles के अलावा अब आपके पास है co-interior angle. These angles also known as consecutive angles. Consecutive angles. These are also known as allied angles. ALLIET. Allied angles. Angle 1 and 2. This is a pair of co-interior angle. Angle 3 and 4. This is another pair of co-interior angles. So these are the co-interior angles. What are parallel lines? The lines on a plane that do not meet at any point are called the parallel lines. The meaning of the parallel lines, the lines जो कभी भी आपस में कहीं नहीं मिलेगी, वो हमारी parallel lines कहलाती है. Now we'll discuss about the transversal of parallel lines. कि जब हम parallel lines पे transversal draw करते हैं तब क्या क्या conditions आती हैं. जैसे this is a line A and B. These are the parallel lines and it is cut by a transversal. Let it be L. Now we will consider about the angles. This is 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. As we have no clue about the angles, if two parallel lines are cut by a transversal, then the pair of corresponding angles have equal measures. It's mean when two parallel lines or more parallel lines are cut by a transversal, then their corresponding angles have equal measure. के corresponding angles के जो pairs के measures होंगे वो equal होते हैं. इसमें एंगल 1 हमारा होगा एंगल 5 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, इसी तरह से एंगल 4 होगा हमारा 8 के बराबर और एंगल 3 हमारा होगा 7 के इक्वल. These are the angles of corresponding pairs. Now second point, if two parallel lines are cut by a transversal, then the pair of alternate interior angles are equal. Alternate 4 का alternate 6, 3 का alternate 5. तो ये आपस में कैसे होंगे इक्वल, यानी 4 इक्वल टू 6 एंगल 6 एंड 3 इक्वल टू एंगल 5. तो ये alternate angles भी इसमें इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस में जो वो ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट by a transversal, then the sum of the pair of interior angle
ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। यानी ट्रांसवर्सल के एक साइड में जितने भी एंगल्स हैं को इंटीरियर एंगल्स, उनका सम 180 होगा। यानी एंगल 4 और 5 कितना हो गया 180। इन द सेम मैनर दूसरी साइड 3 और 6, इसका सम भी कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा या 180।